Hello my dear learners, welcome to our channel Odisha EXPLORIST. साइंस रो जो सीरीज मु आपन पई कहितली नै आनिबी तो सेही सीरीज आमे वर्तमान डिस्कशन करिवा। तो ये सीरीज रे आउ गोटे नुआ क्लास वर्तमान ऐड हे गला जोथिरे आमे डिस्कशन करिवा एंडोक्राइन ग्लैंड्स उपरे। या पूर्व सीएनएस एंड पीएनएस डिस्कशन करथिले सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उपरे। तो वर्तमान टाइम रे जतक सब एंडोक्राइन ग्लैंड अछि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनाल, पैनक्रियाज एंड ये आम जब देखा ये स्कुंडोज रोचे तो ता विषय डिस्कसन करिया जोटा कि आम हेल्पफुल रहिबो। ता पूर्व जानि रखंतु अनएकाडेमी रे मोर डेली लेक्चर चली रीजनिंग रो प्लस बैच स्टार्ट हो सारी। तो जो मैंने वर्तमान सुधा जॉइन होना एप्लिकेशन इंस्टॉल करना एंड भावुं ना बेटर हम कि नब मुझे बेस्ट हम केवल ये मुझे अच्छी बोली नुह। आप देखो वर्तमान टाइम रे जो टेक्नोलोजी जो प्राइस रे अनएकाडेमी ओपीएससी रे आपको अफोर्ड करुँच कहीं भी वर्तमान टाइम रे करेंगे। तो ट्राए करूँ डिसीजन आपण मैंने ने एंड मुझे आपको सजेस्ट ही करुँची डिपेंड कर निजर प्रिपेरेसन को गोटे नेक्स्ट लेवल को लेकिन जातु एंड से भल से प्रिपेयर करूँ। आम देखा वर्तमान टाइम रे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन कौन एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड करिथाए एंड कौन कौन हार्मोन से रिलीज करिथाए। तो फास्ट देखिबा एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डॉट्स आर हेंस दैट इज कॉल्ड डॉक्टलेस ग्लैंड यार देयर सिक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स ताकू डॉक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है एंड एमाने जो सिक्रेशन करिथाए सिक्रेशन करिथांती तो तांको आमे जदी देखिबा आज आमे हार्मोन्स कहिता डिफरेंट डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन आसीताए। हार्मोन इज ए केमिकल जो देखिए प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन कहले आमे सिंपली कोन बुझिताओ हार्मोन होची वन टाइप ऑफ केमिकल जे कि प्रोड्यूस करिथाए आमे कहि परिबा नियत एंडोक्राइन ग्लैंड रो प्रोड्यूस हेताए एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टिंक्टली लोकेटेड टार्गेट ऑर्गन जो हार्मोन नो काम जोठी की तो से आपनर डायरेक्ट सेठी जाई पहुंची थाए। तो जिनस गुडा टिके भलो से आपण माने जानिबे दरकार एंड आको आपण एनालिसिस करिए भी दरकार। जो माने जॉइन हेले तांको फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आस्ते आस्ते आमे स्टार्ट करिबा एंड हार्मोन्स आर नॉट न्यूट्रिएंट केमिकल which a non-nutrient chemical which act as a intercellular messenger and are produced into trace amount. Okay, yes, सुंदर सिंह बारिक ये 4:30 यूट्यूब रे क्लास 9टारे अनएकाडेमी रे क्लासेस पे परिबे। देन आपनकर जो रहुची डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस 10टारे जियोग्राफी रो क्लास एंड 3टारे साइंस रो एमसीक्यू क्लासेस। देन आमे जदी देखिया इन्वर्टिब्रेट्स possess very simple endocrine system with few hormones where a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates and the human endocrine system is described here. Basically आमे देखिए human endocrine system रे कौन कौन रोची जदी देखिबे देखो हाइपोथैलेमस, पेनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनाल, ओवरी एंड टेस्टिस एगुड़िक हूँ डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको जब जड़े पचारे कि एंडोक्राइन ग्लैंड कहले कौन कौन तो ये आप हाइपोथैलेमस कहींपारे, पेनियल ग्लैंड कहींपारे, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनाल, टेस्टिस एंड ओवरी एगुड़ा हूँ आम कौन कही था ना दीज आर द येस ऑर्गेनाइज्ड वे रे ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गेनाइज करिथा हम बॉडी को एंड एमाने आमे कहि परिबा दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड भाबरे आमे सिंपली नै ताऊ। ता सहित जदि देखिबा इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन लाइक एठी कहि परिया गैस्ट्रोनियल ट्रैक्ट रहला, लिवर आसले, किडनी आसले, हार्ट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। देखंतु हार्ट हे जाऊ, लिवर हे आसी जाऊ, किडनी हे जाऊ एंड आमे जदि देखिया जदि देखिबा यस गैस्ट्रोनेशियल ट्रैक्ट जो किछि ना किछि हार्मोन रिलीज करिथांती ताकू भी देखिबा एंड ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ all major endocrine gland and hypothalamus of human body एथिरे आमे डिस्कशन करिबा ए जो क्लासेस रे एंड एठी देखंतु फास्ट ए जो पिक्चर ता कमेंट सेक्शन ने आपण माने कहि परिबे ये जो माने रिकॉर्डिंग देखि पारसंती से माने कहि परिबे ए पिक्चर ता कोथिरो जोटा ऑरेंज कलर हेगी अछि। तो ये जदी देखिया फास्ट वन ये आमे कहिताउ कोन निहाते बारे कमेंट सेक्शन ने देले मु टिके जानिबी कि आपण माने केवण जानि सिने जानि नांती। तो जो माने जानि नांती जो माने असुविधा हला तो जानि रखुं ताकू हाइपोथैलेमस कहा जाता है। Hypothalamus is the part of forebrain and regulate a wide spectrum of the body function. Hypothalamus आपण जानि रखंतु बॉडी रो जो फंक्शन थाए ताकू कंट्रोल करि थाए। मु जेमिति आगुरु भी आपण को कहि सारी छि कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम बॉडी रो जोडा हेइ थाए तो ताकू हाइपोथैलेमस कंडक्ट करि थाए एंड इट कंटेन्स ए सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो yes secretory cell that is called nuclei which produce hormone माने ये होची मेन। देन तार जदी देखिबा गुडे न्यूक्लियस थांती न्यूरोस ये सेक्रेटरी ये जो हमर रिलीज होता है
तो ताको आमे कहि परिबा कि नाही एमाने हार्मोन प्रोड्यूस करितांती ता बाद दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ए माने कोन करितांती सिंथेसाइज करितांती सिक्रेशन करितांती हमर जो पिट्यूटरी ग्लैंड रो जो हार्मोन गुडी का आसुची एंड हाउएवर दीज हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स रिलीजिंग हार्मोन with stimulate secretion of pituitary hormone and inhibiting hormone. Inhibiting hormone कहले which inhibit secretion of pituitary hormone. Okay, then तापरे कहि परिबा जेमिति कि एठी आसिला फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आल कॉल आमे जदि देखिबा yes gonadotropin release hormone GnRH stimulate the pituitary synthesis and release एठी आमे जदि देखिया yes gonadotropins रहउची जोडा कि आमे कहि परिया हाइपोथैलेमस रे आसुची on other hand somatostatin from the hypothalamus inhibits release of growth hormone. Somatostatin जो देखिबा release of growth hormone हमर pituitary रे नहीं थाए and final one these hormone originating in a hypothalamic neurons passes through हमें कहि परिबा axon and it are released from their nerve endings and these hormone reach the pituitary gland through a जदि देखिया yes portal circulatory system and regulate the function of the interior pituitary and the posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus. तो एठी हमें जदि बेसिकली गोटे सिंपल वर्ड रे बुझिया जिबा ये हमें कहि परिबा जेमिति हाइपोथैलेमस मो आगुर कहितली जेतक सब हमर इमोशनल कंट्रोल हे जाऊ तो ताकू आपनकर ये कंडक्ट करि थाए दीज आर द हार्मोन रिलीज करि थाए एंड हाइपोथैलेमस फोर वेन रो गोटे पार्ट आपन जानि रखंतु ता बाद एठी जदि देखिया छोटो हाइपोथैलेमस सहित लागि कि अछि छोटो ग्लैंड ता बट इंपोर्टेंट ग्लैंड ताकू हमर पिट्यूटरी ग्लैंड को आ जाय थाए द पिट्यूटरी ग्लैंड बोनी कैविटी दैट इज सिलेट्रोसिया जोडा रोजी ता अंडर रे थाए हाइपोथैलेमस रो स्टार्ट सहित कनेक्टेड हे कि थाए ओके एंड इट इज डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिकली इनटू हमें जदि देखिबा एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस सहित ये माने डिवाइड हे कि एंड ता भीतर जदि देखिबा एडिनोफिसिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट पारा जदि देखिबा यस डिटेल्स आउस एंड पारा इंटरमीडिएट आसुची दीटा देन ता बाद हमें जदि देखिबा द पारा डायलिसिस जदि देखिया यस रीजन्स ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसर्स भाबरे जाना जायताय एथिरे ग्रोथ हार्मोन देन एठी हमें प्रोक्लिनेशन हार्मोन हे जाऊ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हे जाऊ एंड एठी ACTH एडिनो जदि देखिबा ये स्कोटोफ्रिक हार्मोन या हमें जदि देखिया ये लुटिनाइजिंग हार्मोन आसु या हमें कोइ परिया नियतर फोलिसिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH LH ACTH TSH PRL GH ए सब हार्मोन गुडी को रिलीज करि थाए थायराइड कथा जदि देखिबा एंड ता बाद हमें जदि देखिबा पारा जदि देखिबा ये इंटरमीडिएट सीक्रेट ओनली द हार्मोन that is called melanocyte stimulating hormone MSH को जाता है however in humans the para intermediate is almost merged into para जदि देखिए स्टिल्स रे मेंशन करता है and it is से कोई बार neurophysics para nervous also known as posterior pituitary stores and release two hormone that is called oxytocin important love hormone and it हमें जदि देखिए yes vasopressin which are actually synthesized by a hypothalamus and are transported axonally to हमें जदि देखिए न्यूरोफिसिस रे आपन ट्रांसपोर्ट हे किता है and over secretion of GH stimulate abnormal growth of body lending and हमें जदि देखिए gastrism and low secretion of GH result in stunned growth resulting in pituitary dwarfism माने हमें मोटा माने बड़ होबा डेंगा होबा छोट होबा ई सब जिंस ऊपर थाए ग्रोथ हार्मोन आकु कुआ जायता एक्चुअली प्रोक्लेशन रेगुलेटरी ग्रोथ ऑफ मामालिरी ग्लैंड मामालिरी ग्लैंड जो आमे जानि रखंतु जेहेतु आमे मामाल तो निहाती भाबरे हमर जो मिल्क फॉर्मेशन होता है ताकू भी आमे कहितारे हेल्प करि थाए TSH आमे कहि परिबा थायराइड हार्मोन्स भाबरे कुआ जायता है थायराइड ग्लैंड को माने रेगुलेट करि थाए ACTH ओके स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड जदि देखिए ग्लूकोडाइस होची या एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करची एंड फाइनल वन LH एंड FSH stimulate हमें जदि देखिबा ये गोंडल एक्टिविटी एंड हेंस दीज आर कॉल्ड गैंडोट्रोफिक फिन्स भाबरे हमें सिंपली जानि थाउ नेक्स्ट वन को जदि जिबा in males LH stimulate the synthesis and secretion of hormones that is called androgens from testis in male FSH and androgens regulate एटी हमें जदि देखिए spermatogenesis भाबरे जाना जायता है in female LH include ovulation of fully matured हमें जदि देखिए follices ये हमें जदि देखिए ग्राफिन फोलिसिस also and maintain the
corpus yes आमे जदि देखिबा लिप्टम formed from the remnant of graphene fossils over evolution. FAS stimulate the growth and development of ovarian fossils in females. And MSH yes आमे जदि देखिया melanocyte मेलानिन कंटेंट सेल रेगुलेट पिगमेंट ऑफ द स्किन. yes आमे जानि रखु MSH हमरो जो ब्लैक एंड व्हाइट स्किन पिगमेंट को भी कंट्रोल करि थाए. ऑक्सीडेशन एक्ट एज ए स्मूथ मसल ओवर द बॉडी, stimulate their contraction in female. It stimulates the vigorous contraction of uterus and time of childbirth and milk ejection from mammillary gland. Oxidation hormone को love hormone भाବରେ भी जाना जाय था. डायरेक्ट क्वेश्चन आसीची. And vasopressin act mainly at the kidney and stimulates respiration of water and electrolysis by distal tubules. And आमे जदि देखिया thereby reduces loss of water through urine. Hence it is also called anti-diuretic hormone या ADH भाବରେ भी जाना जाए. या पर मेनली देखिया पेनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड अलग, पेनियल ग्लैंड इठी अलग. देखंतु दीटा भितर डाउट रे मनुष्य थांती किंतु डाउट आपण माने हेबेनी. पेनियल ग्लैंड लोकेटेड इन डोर्सल साइड ऑफ द फोर वेन, डोर्सल कैविटी कनेक्ट करी जो रखी थाए. एंड ये आमे कहिता नियते परे यस मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करी थाए. एंड मेलाटोनिन प्लेज वेरी इंपोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर ड्यूरिनल रिदम ऑफ आवर बॉडी. हमर बॉडी रो रिदम जो मेंटेन करी थाए पेनियल ग्लैंड करी थाए. फॉर एग्जांपल इट हेल्प टू मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम स्लीप और माने सोइबा उठिबा. आपण केतेबेले सोइबे केतेबेले आपणकर माने उठी जिबे गोटे सर्टन टाइम हेले बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करी थाए. पिगमेंटेशन एंड आमे जदि देखिबा मेटाबॉलिज्म हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हे जाऊ, as well as our defense capability पेनियल ग्लैंड कंट्रोल करी रखी. एंड देन या पर जदि आमे देखिया जिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट वन थायराइड ग्लैंड. थायराइड आमे जदि देखिबा इंपोर्टेंट वन जानि रखंतु. ये आमे कहिताउ टू लोब्स थाए व्हिच आर लोकेटेड इन आइदर साइड ऑफ ट्रेचिया. ये हमर जो दीटा लोब आसुची राइट लोब लेफ्ट लोब आसुची, ट्रेचिया होची मेन पाइपटा. बोथ ऑफ द लोब्स इंटरकनेक्टेड विथ थिन फ्लैप कनेक्टेड टिश्यू दैट इज कॉल्ड इस्थोमस. इस्थोमस सहित कनेक्टेड हेकी थांती माने इस्थोमस सहित कनेक्टेड हेकी दीटा लोब रहिला. द थायराइड इज कंपोज्ड ऑफ आमे जदि देखिबा नियते परे follicle and stromal tissue. Each thyroid आमे जदि follicle is composed of yes follicular cell and enclosing cavity, and these follicular cells synthesize two hormone. Tetra जदि देखिबा नियते डाइथायराइड हार्मोन थायरोक्सिन एंड आमे जदि देखिया टाइडायरोथिन T3. ओके एंड एठी आमे कहि परिबा आयोडीन. आयोडीन इंपोर्टेंट थाए थायराइड पई रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस को कंट्रोल करिया पई. आयोडीन डेफिशिएंसी हेले गोइटर डिजीज हो जाय थाए. हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड yes maturation of growing baby leading the stunned growth. ये आमे कहि परिबा मेंटल रिडक्शन, लो इंटेलिजेंस, abnormal skin, डेफ हो या मस्टिज्म आसुची. ये बेसिक रा आसुची ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोडुल्स एट द थायराइड ग्लैंड. ये हमें कोई परिबा द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू abnormal high levels leading the condition is called hypothyroidism which adversely affect the body physiologically. And thyroid hormones play an important role in regulation of basal metabolic rate, and these hormones also support the process of red blood cell formation. Thyroid hormone control the metabolism of carbohydrate and आमे जदि देखिबा नियते प्रोपोर्शन and fat, maintenance of water and yes electrolyte balance, and also influenced by thyroid hormones. TCT thyro calcination आमे जदि आसीता which regulate blood calcium level को भी मैनेज करता है थायराइड ग्लैंड. इंपोर्टेंट वन. एंड साइड रे जो चारिटा डक्ट अच्छी ये जो मैंने क्लासेस रिकॉर्डिंग देखिए कहीं लाइव रे बर्तमान खूब कम ही अच्छा 2 दिन है क्लास स्टार्ट कराई तो निहत भाव होपफुली आप जॉइन हे. ये जोटा ये जो चारिटा डक्ट अच्छी ये एक्चुअली कौन सिंपल जिनस आपने भलसे जाणी रखु. जो ये चारिटा डक्ट अच्छी दैट इज पाराथायरॉइड ग्लैंड भाव में कहुए सपोर्ट करी थाए थायरॉइड ग्लैंड रो पाराथायरॉइड ग्लैंड. In humans, 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. One pair each has 2 lobes of thyroid gland. Totally 4 थाए parathyroid gland. And it PTH secrete PTH regulate circulating level of calcium ion. Parathyroid hormone calcium जो levels टा थाए blood रे ताको maintain करी थाए. And PTH act as a bone stimulate the process of bone respiration
PTH also stimulate the reabsorption of CO2 plus ion with renal tubes and increases CO2 plus ion absorption from digested food. Okay, it is thus clear that PTH is hyper যদি দেখিবে yes calciumic hormone, that is it increases the blood CA2 ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଲେଭେଲକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିଥାଏ ବେସିକ ଜିନିଷ। along with TCT it played a significant role in calcium balance in our body। देन ये गोटे इंपोर्टाट पार्ट आसूँ लंग्स एंड आम कहीपर बॉडी भितर रोचे ताकू आम सिंपली कौन कही था थाइमस कही था। थाइमस गोटे जिन जाणी रखु एज हिसाब से सरी सरी आसी था येस कैप्सूल टाइप रहा गोटे थाए थाइमिक लोबल भाव कह जाए। द थाइमस ग्लैंड इज ए लेबर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड द आम जो देखिए स्ट्रेनम स्ट्रेनम कहले मझी जो हाड़टा तार पछपटे थाए येस वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा and the thymus play a major role in development of immune system। से बुढ़ा बुढ़ी मानकर सरी सरी माने थाइमस ग्लैंड ग्रोथ करि न थाए डेथ होबाक लगी थाए तो से आम कहीपर कि नहीं ओल्ड पीपल माने तांकर इम्यून सिस्टम न थाए। द ग्लैंड सिक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन्स दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन्स एंड थाइमोसिन्स प्ले ए मेजर रोल इन डिफरेंट yes differentiation of T lymphocytes which provide cell जदि देखिए yes mediate immunity भाव में। And in addition thymosins also promote production of antibodies to provide yes आम जदि देखा निहतर humoral immunity को भी increase करता है। and thymos degradation of old individual resulting in a decrease of production of thymosin। as a result the immune response of old person become weak। किडनी उपर ये दीटा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर थाए ओके दीटा आप देखिए जोटा आम कहीपर कौन ना निहाती भाव में आड्रेनालिन ग्लैंड क्राउन स्ट्रक्चर आड्रेनाल ग्लैंड इंपोर्टेंट वन आड्रेनाल ग्लैंड और आड्रेनाल कॉर्टेक्स दीटा विषय देखा। आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ आड्रेनाल ग्लैंड one has anterior part of the each kidney and the gland is composed of two types of tissue। the centrally located tissue is called adrenal medulla and outside is adrenal cortex। okay then next time जो देखिए the adrenal medulla secretes two hormones adrenaline और आम जो देखिए epinephrine and ये आम जो देखा no adrenaline और neo yes refrain these commonly called आम जो देखिए catecholamines भाव में जाना जाता है। adrenaline and आम जो देखिए noradrenaline are rapidly secrete in response to stress or any kind of during आम कहीपर एनर्जी सिक्रेशन and this is called emergency hormone या फ्लाइट और फाइट हार्मोन। adrenaline ग्लैंड रू जो adrenal हार्मोन रिलीज होता है आगो emergency हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। these hormone increase the alertness and a pupillary dilation हो जाओ and it polarization या sweating आपको कंट्रोल करता है। both the hormone increase the heartbeat strength of the heart and it contraction and the rate of respiration को कंट्रोल करता है। कंबाइन ऑडिटर 2017 हाँ कौ दिन एग्जाम अच्छी भितर अच्छी पार्ट एग्जाम टा रिव्यू करी कंबाइन ऑडिटर यहाँ गोटे मेन ग्लैंड आसूँ आमर इंपोर्टाट वन जानी रखु जो आम देखी था ये पैनक्रियाज क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन टी टेलीग्राम रे शेयर करिए मुझे देखिए। पैनक्रियाज कथा कहबा कंपोजिट ग्लैंड व्हिच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड and the endocrine pancreas consists of islet of Langerhans and these are 1.2 million आमे जदि देखिबा islet of Langerhans in normal human pancreas representing only 1 and 2% of pancreatic tissue। टू मेन आपनर जदि देखिबा रिलीज करि थाए से पी सेल द ए सेल सिक्रेट द हार्मोन ग्लूकागन पी सेल आपनर जदि देखिबा इंसुलिन एंड ग्लूकागन इज ए पेप्टाइड हार्मोन एंड प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागन act mainly on the liver cell stimulate the glycogenesis resulting in increase in blood sugar ये हमें जदि देखिए हाइपोग्लाइसेमिया भाव में भी जाना जाता है। एंड इन एडिशन टू द हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस which also contribute the hypoxia glucagon reduce the cellular glucose uptake and utilization thus the glucagon is a hyper yes glycemic hormone भाव में जाना जाता है। नेक्स्ट है जदि देखिबा insulin is a peptide hormone which play a major role in regulation of glucose homeostasis। insulin act mainly
ऑन आमे जदि देखिए हेपेटाइटिस या एडिपोसाइट and आमे जदि देखिबा enhance or cellular glucose uptake and utilize as a result there is a rapid movement of glucose from blood of आमे जदि hepatitis या adipocytes resulting in decreased blood glucose level ये आमे hypoglycemia भाबरे जणा जाय थाय। नेक्स्ट देखिबा हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रियन ट्रैक्ट जोटा इंपोर्टेंट देखिले आगुरु देखिथिले कोन yes arterial nutritional factor ANF which decrease blood pressure when blood pressure is increased ANF secreted which causes dilation of the blood vessel and this reduces the blood pressure तो high blood pressure रहता है yes arterial हमें कोई yes nitrification factor ANF release होता है and the idea में जो देखिए justa molar cell the kidney produces peptide hormone that is called हमें जो देखिए ethinophrin we stimulate the amyloidosis from RBC ରୁ ଆସୁଛି କାଲିଠୁ କରିବା OD ବ୍ଲଗର reasoning ର class endocrine cell represent in different part of the gastrointestinal tract secrete four major peptide hormone normally gastrin secretion cytosinin हे जाओ gastric inhibitory peptide आसी जाओ या gastrin act as a gastric gland and stimulate the secretion of hydrochloride acid and yes pepsinogen भाबरे आकु जाना जायता है छोट छोट जिनस गुड़ा बड़ भल से जानी रखिया दरकार तो जीएच रु किडनी आसु लिवर हे जाओ स्पाइनल रूट पेरिफेरल नर्व्स हे जाओ हार्ट हे जाओ ब्लड वेसल्स टेस्टिस ओवरी किडनी एंड इंटेस्टाइन को ही जाता है ओके तो लास्ट देखिबा हाउ मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड आर देयर इन ह्यूमन बॉडी लार्ज नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जेतरे हमें देखिले पेनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी थायराइड and parathyroid thymus pancreas adrenal testis in males and ovaries in female एटा सरलाइन who control the working of endocrine gland in our body nervous system okay what is the function of adrenal gland already देखिले two adrenal gland present in our body and it is secrete adrenal hormone जोटा flight or fight hormone and हमर जो anger excitement ये हमको जो भय लगे ये सब एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल करता है व्हाट डज हार्मोन डू आवर बॉडी हार्मोन प्ले ए वाइटल रोल इन आवर बॉडी दे आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेवरल फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी लाइक ग्रोथ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जी देखा सी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्शन ओके तो बेसिक जिनस गुड़ा ही रहा तो आज सेक्शन ने रीजनिंग क्लास काली स्टार्ट हो तो समस्त धन्यवाद कि आज सेक्शन में जॉइन हो बहुत ही भल से प्रिपेरेसन है एंड गुड़ाई जिनस को आम डिस्कसन कले जदि पर्यटन बेस्ट वे प्रिपेरेसन करूँ एंड निजर प्रिपेरेसन को सही लेवल को लेकिन जातु ताकि आपण प्रिपेरेसन गोटे हाई रिच को जीव बस आपको समस्त ऑल द बेस्ट कहबी सेक्शन को ये एंड कर नेक्स्ट सेक्शन में देखा से पर्यटन धन्यवाद जय हिंद जय